कल का क्लास नहीं किया आप? हैव यू नॉट डन यस्टरडे क्लास? अरे बाबू, कल भी खत्म हो गया न्यूमेरिकल और नया कॉन्सेप्ट। इनका एडवांस्ड वाला करेंगे आज। वाओ, आज तो कुछ हो जाएगा। आदर्श टाइम पे आ गया। हाँ यस, टुडे यू हिट करेंगे। क्या रे, टाइम पे आ गया? उपाध्याय कैसा है? चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नॉट रिक्वायर्ड सत्येंद्र, यू कैन कंटिन्यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन कंटिन्यू हियर, नो इश्यू, नोबडी विल आस्क यू एनीथिंग। हिमांशु सिंह, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? कुछ पूछने है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ डाउट होगा तो पूछ लो हिमांशु गारू। बबलू कैसा है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेबल पे बैठ के सो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। नॉट मैसेज इन द ग्रुप? कुछ लोग तो मैसेज किया ग्रुप में। 1 मिनट, आई विल चेक। कौन मैसेज किया? अरे बाबा, ग्रुप में। ओके, ही इज सेपरेट स्टूडेंट, ही इज अदर स्टूडेंट। ये तो डिफरेंट स्टूडेंट है, ठीक है बेटा। क्या आवर रिलेटिव कैंडिडेट गोइंग टू बी नेक्स्ट पीएम? हमारा रिलेटिव कैंडिडेट इज आदर्श उपाध्याय ओनली, सो यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट पीएम। क्या उपाध्याय गारू? चलो, सो नो डाउट्स इन हाइड्रोग्राफ ना? हाइड्रोग्राफ का बारे में कुछ डाउट तो नहीं है ना बेटा? बोलो। देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग हाइड्रोग्राफ। एनीवन हैविंग डाउट्स? नाउ वी कैन क्लियर, देन वी मूव फॉरवर्ड। आपको हाइड्रोग्राफ का बारे में कुछ डाउट होगा तो अभी क्लियर करके चलेंगे आगे। मधु, चलो। लक्ष्मी गारू, लक्ष्मी गारू क्लियर ना? सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोग्राफ, हम हाइड्रोग्राफ का बात करने के टाइम पे क्या बोल दिया? व्हाट वी सेड? हाइड्रोग्राफ इज फॉर वन कैचमेंट। ओके ओके कृष्णा गारू, फॉर वन कैचमेंट, फॉर वन रेनफॉल, फॉर वन कैचमेंट, फॉर वन रेनफॉल। ऐसा होता है ना? दिस इज अ कैचमेंट, दिस इज अ कैचमेंट। ये कैचमेंट में आउटलेट से पानी चल रहा है, ये कैचमेंट में आउटलेट से पानी चल रहा है। सुधांकुल स्टैंडिंग हियर, ही इज गेटिंग द डिस्चार्ज डेटा फॉर एवरी रेनफॉल। हर एक रेनफॉल को डिस्चार्ज मेजर करके डेटा दिएगा ना सुधांकुल। सो 1 ईयर में 100 रेनफॉल्स आर देयर फॉर एग्जांपल। 1 ईयर में ये 100 टाइम से बारिश का अंदर चलना पड़ेगा। ही कैन मेजर द डिस्चार्ज वैल्यूज, ही कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, ही कैन प्लॉट 100 हाइड्रोग्राफ्स। निकलना पड़ेगा नहीं? सो हर एक रेनफॉल को एक हाइड्रोग्राफ। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। हर्ष गारू कैसा है? हर एक रेनफॉल को एक हाइड्रोग्राफ। एक साल में 100 रेनफॉल्स, 100 हाइड्रोग्राफ्स मींस 100 बार बारिश का अंदर चलना पड़ेगा, 100 बार मेजरमेंट करना पड़ेगा। 100 फ्लड हाइड्रोग्राफ्स, 100 डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। दोनों लिखाना पड़ेगा ना? 100 एफएच, 100 डीआरएच। दोनों तो निकलना पड़ेगा ना? बोथ एफएच एंड डीआरएच दोनों तो निकलना पड़ेगा। ऐसा नो? देखो हमारा सुधांकुल आटा गारू इतना अच्छा आदमी है क्या? इतना काम करेगा क्या? ये तो बहुत लेजी आदमी है। He is a very very lazy fellow. He can't do that much work. Such kind of lazy scientist. Who is that lazy scientist? All lazy fellows will become scientist. शर्मा। अरे हर एक टाइम रेनफॉल का जगह पे हाइड्रोग्राफ निकलना क्या है? हर एक टाइम रेनफॉल का जगह पे हाइड्रोग्राफ निकलना क्या है? देखो, वी कैन गो विथ वन कैचमेंट, n नंबर ऑफ रेनफॉल्स, वन हाइड्रोग्राफ, देन इट शुड बी यूनिट हाइड्रोग्राफ। सिंगल हाइड्रोग्राफ से एक कैचमेंट को एक हाइड्रोग्राफ ले लो, अप्लाई फॉर एनी रेनफॉल इन द 30 इयर्स ऑफ पीरियड, 365 डेज। दैट हाइड्रोग्राफ प्रोवाइडेड बाय द लेजी साइंटिस्ट शर्मा। बता रहे आपको, instead of plotting n number of hydrographs for every rainfall, instead of plotting one rainfall, one hydrograph for n storms, you can utilize it. देखो ये तो बता है, हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन व्हाट कैरेक्टर्स? हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन व्हाट कैरेक्टर्स? बोलो प्लीज। हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन कैचमेंट कैरेक्टर्स, कैचमेंट कैरेक्टर्स, स्टॉर्म कैरेक्टर्स, कैचमेंट कैरेक्टर्स एंड स्टॉर्म कैरेक्टर्स। सो कैचमेंट कैरेक्टर्स फिक्स्ड होता है ना, दे आर नॉट चेंजिंग। एक रेनफॉल फॉर एक कैचमेंट को, फॉर वन कैचमेंट, फॉर वन कैचमेंट, फॉर एनी स्टॉर्म, स्टॉर्म कुछ भी होता है, फॉर एनी स्टॉर्म, फॉर एनी कैचमेंट, फॉर वन कैचमेंट, फॉर एनी स्टॉर्म। कैचमेंट कैरेक्टर्स, एरिया ऑफ कैचमेंट, लेंथ ऑफ फ्लो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, पूरा कांस्टेंट होता है या नहीं? बोलो। स्टॉर्म मींस रेनफॉल बेटा, स्टॉर्म मींस रेनफॉल। ये फिक्स्ड है या नहीं? बोलो बेटा। अरे बाबू चपंडी, एक कैचमेंट बोलने के बाद रेनफॉल अक्कर्ड इन वन कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, कैचमेंट लेंथ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ कैचमेंट, शेप ऑफ कैचमेंट, ऑल फिक्स्ड ना? एटलीस्ट फॉर 30 इयर्स, एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम मिनिमम 30 इयर्स को कांस्टेंट होता है। बट व्हाट अबाउट स्टॉर्म कैरेक्टर्स? स्टॉर्म कैरेक्टर्स वेरिएबल फ्रॉम स्टॉर्म टू स्टॉर्म। हर एक स्टॉर्म को चेंज होता है, हर एक स्टॉर्म को चेंज होता है। देखो वी हैव ए फार्मूला, हमारा पास तो ये फार्मूला है ना। यस्टरडे वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना। वी हैव रिटन लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के लिए
दो चीज आता है. फर्स्ट वन वी हैव रिटन एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू ERF डेप्थ. सेकंड फार्मूला एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ. लिख दिया ना एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ. सो एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ में क्या ले रहा है आप? पक्का तो पक्का डिस्चार्ज इनटू टाइम बेस तो लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द शेप. हाफ इनटू Q इनटू TB और A प्लस B by 2 इनटू Q ऐसा ले सकता है. नाउ इन दिस area of catchment constant, this is constant. For every catchment time base is constant. For every catchment time base is constant. So if you take rainfall depth is unit depth. If I say rainfall depth is unit depth 1 centimeter, discharge भी constant हो जाएगा ना. discharge भी constant हो जाएगा ना. rainfall depth is unit depth, discharge भी constant हो जाएगा ना बेटा. अरे for every duration of rainfall TB is constant ना. निपुण गारू, we can say there is a 2-hour rainfall, time base 20 hour. Then when we say 3-hour rainfall, time base 1 hour बढ़ जाएगा 21 hour. 4-hour rainfall, time base 22 hour. बस फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. So हमारा फार्मूला में we can say like this, half into, for example we are saying a triangle, half into Q into yes, time base is equal to area of catchment into effective rainfall depth. ऐसा ले लिया ना कल. We have taken like this ना. For a D-hour rainfall, please understand, for a D-hour rainfall of 1 centimeter unit depth. For a D-hour rainfall of 1 centimeter unit depth. Okay. Area of catchment TB fixed. Area of catchment TB fixed. ERF is 1 centimeter only. So for any future 1 centimeter depth D-hour rainfall. For any future 1 centimeter depth D-hour rainfall. Q constant. होता है या नहीं? होता है या नहीं बोलो प्लीज कंफर्म मी. एनी टाइम इन द कैचमेंट कभी भी हो जाएगा. आज तो आप निकल गया. टुडे यू प्लॉटेड फॉर 1 centimeter डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर द गिवन कैचमेंट फॉर द गिवन टाइम बेस. व्हाट इज डिस्चार्ज वैल्यूज? व्हाटएवर डिस्चार्ज वैल्यूज फॉर एनी फ्यूचर 1 centimeter डेप्थ तो कांस्टेंट हो गया. टाइम अगेन D-hour only. डिस्चार्ज इज कांस्टेंट. होता है या नहीं? होता है या नहीं बोलो. आज एक रेनफॉल हो गया 3 आवर का 1 centimeter रेनफॉल. 1 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद, 10 ईयर के बाद कभी भी ये 1 centimeter 10 आवर हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है बेटा. आसपास में होता है, 99% होता है, नो प्रॉब्लम. So Q is constant. Now, in future, very important. In future, 3 centimeter depth of rainfall, D-hour rainfall. Then what should be discharged? 1 centimeter depth को Q. centimeter को क्या होता है बेटा? 3 centimeter को क्या होता है? 3Q होता है बस. Remaining everything constant ना. Time base constant. समझ आ रहे? Time base constant, area of catchment constant. Just depth of rainfall तो differ हो गया. समझ आ रहा है आपको? और एक बार आपके लिए सत्येंद्र. So first rainfall we are writing half into Q into time base is equal to area of catchment into 1 centimeter. into 1 centimeter. Second rainfall में क्या हो गया? Half into Q into same value ना. This is Q1 ले लो. This is Q2. Then time base तो same है, कोई डाउट नहीं. Area of catchment तो same है, कोई डाउट नहीं. Into 3 centimeter. So क्या हो गया? 3 times बढ़ गया ना. Q1 is 1, Q2 is 3. 3 times बढ़ गया ना. समझ आ रहे? Since for D-hour rainfall TB constant for same catchment ना, area कभी भी same होता है. For same catchment area constant. So only 2 factors. Discharge directly proportional to depth. Remaining तो nullify हो गया. समझ आ गया अभी? What we are taking in unit hydrograph concept. Discharge directly proportional to ERF depth. Remaining तो constant हो गया, निकल गया. That concept is D change हुआ तो पूरा change होता है बेटा. He is saying, Sharman गारू बोल रहा है 1 hour rainfall का एक ड्रा करो हाइड्रोग्राफ, 2 hour rainfall का सेकंड वन ड्रा करो, 3 hour rainfall का थर्ड वन ड्रा करो. ऐसा 1 to 24 hours ड्रा करो, बस हो जाएगा ना. रेनफॉल विल नॉट अकर मोर देन 24 hours. So आपको पास 24 हाइड्रोग्राफ्स होता है, 30 इयर्स सेम हाइड्रोग्राफ्स यूज कर हो जाएगा ना. निपुण जी समझ आ रहे हैं? एक बार एक कैचमेंट को 24 हाइड्रोग्राफ्स ड्रा करो. एक बार एक कैचमेंट को 24 हाइड्रोग्राफ्स ड्रा करो, बस होता है. आप यूज कर सकता है टिल द एंड ऑफ कैचमेंट मॉडिफिकेशन. कैचमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, चेंज हो जाएगा. कैचमेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो गया, चेंज नहीं होना चाहिए. बस समझ आ गया ना. यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ फॉर 1 centimeter डेप्थ ऑफ रेनफॉल. आपको हाइड्रोग्राफ फॉर 1 centimeter डेप्थ मिल गया. यू कैन प्लॉट फॉर हाइड्रोग्राफ फॉर 2 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter. पूरा दुनिया में कभी भी यूज करेंगे. सेम आवर को स्टार्म वेरिएशन पे डिस्चार्ज वेरी करेगा. ये डिस्चार्ज वेरिएशन हाइड्रोग्राफ में मिलेगा ना. ये डिस्चार्ज वेरिएशन हाइड्रोग्राफ ग्राफ में मिलेगा. Q1 Q2 Q3 मिलेगा ना बेटा. ऐसा भी करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं. यस, Q is directly proportional to depth. सिंपल होता है. कंप्लीटेड ऑल स्लाइड्स कंप्लीटेड. डी कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा. डी. सो नो, टुडे 2 hour वी आर मेकिंग इट कांस्टेंट. इमरान आज 2 घंटा रेनफॉल आ गया.
आज 2 घंटा रेनफॉल आ गया, बाद में एनी टाइम whenever 2 hour रेनफॉल occur you can use that हाइड्रोग्राफ. आज 4 घंटा रेनफॉल आ गया, you can plot a हाइड्रोग्राफ. फ्यूचर में कभी भी 4 घंटा हो गया, you can use that. Means you are making 1 hour unit हाइड्रोग्राफ, one graph, 2 hour unit हाइड्रोग्राफ, second graph, 3rd hour unit हाइड्रोग्राफ, third graph, like that. हर एक घंटा को 24 ग्राफ्स निकलना पड़ेगा, हर एक घंटा को 24 ग्राफ निकलना पड़ेगा. So depending upon your duration of rainfall, yes, depending upon your duration of rainfall का वजह से you can say that, you can say it can be varying. अरे ड्यूरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा हो जाएगा क्यू पीक? ऐसा नहीं ना, क्यू पीक इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ. ड्यूरेशन से कैसा हो जाएगा? इनवर्सली होता है. देखो एक बार इधर तो क्यू है ना, ये क्यू चाहिए आपको, ये क्यू चाहिए आपको सत्येंद्र. टाइम कहाँ आएगा? टाइम आरएचएस में डिनोमिनेटर में आएगा ना टाइम, आरएचएस में कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा ना टाइम. So this is to clarify guys. Completed writing all the slides? All slides completed? Slide 1, slide 2. Yes, हर एक घंटा को हर एक कॉम्बिनेशन को मिल जाएगा बेटा. क्लास में नहीं आ रहे अच्छे से, ग्रुप में डाउट पूछ रहे मुसाफिर भैया. दिस स्लाइड कंप्लीटेड. बैठो डूब गया, हाइड्रोग्राफ में डूब गया, पानी में डूब गया मुसाफिर गारू. डन, खत्म. यस करेक्ट, अच्छा गारू. 1 hour ग्राफ, 2 hour ग्राफ, 3 hour ग्राफ, लाइक द 24 ग्राफ तो करना पड़ेगा बस. एक बार 24 ग्राफ करने के बाद बस हो जाएगा, जिंदगी भर यूज करेंगे. एक हाइड्रोलॉजिस्ट का जिंदगी खत्म हो जाएगा ना 30 ईयर. राहुल कंप्लीटेड. So please understand, I will draw easily one more explanation for you easy. This is our catchment, okay, this is our catchment. So इधर तो पानी यहां तक है इनिशियली, ये तो बेस फ्लो. So rainfall of 3 hour duration, okay, 3 hour rainfall. पहले 1 सेंटीमीटर डेप्थ दे रहा है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ पानी दे रहा है. So it increases 1 centimeter depth. Now 2 centimeter management characteristics changing. Same 3 hour rainfall we are saying, same 3 hour rainfall. So TB same है, TB same रहेगा ना, same TB रहेगा. एरिया आल्सो सेम रहेगा, एरिया आल्सो सेम रहेगा. नाउ अब क्या होता है, डेप्थ तो डबल हो गया ना, डेप्थ तो डबल हो गया. हाउ मेनी टाइम्स डेप्थ इंक्रीजेस? सो ये दे रहा है हमको डिस्चार्ज क्यू, ये दे रहा है हमको डिस्चार्ज 2Q. समझ आ रहा है बेटा? एरिया ऑन टीबी कांस्टेंट होता रहता है, बट इट इज फॉर 3 आवर. नेक्स्ट 4 आवर का और दूसरा वैल्यू, 5 आवर का और दूसरा वैल्यू, बट 3 आवर कभी भी होता है, 3 आवर को कभी भी होता है, जस्ट मल्टीप्लाई विद डेप्थ हो जाएगा बस. एंड people are fighting in the group. हाँ, Q peak is inversely proportional to time. ये लिख दिया ना हम, how it is possible लिख दिया ना. मुसाफिर ये तो आपका डाउट है ना बेटा? हाँ, some people are asking how Q is inversely proportional to time. Discharge is equal to volume by time. Volume is area of catchment into ERF depth. When you are taking effective rainfall depth, here you take duration of rainfall. अब तो बोलो, अभी बोलो, हाउ डिस्चार्ज रिलेटेड टू टाइम? टाइम आरएचएस में डिनोमिनेटर में है ना, आरएचएस में डिनोमिनेटर में है ना. सो क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन. आदर्श उपाध्याय ये नया ग्रुप में सो मेनी न्यू गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर, सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. इनको जिंदगी बचाने के लिए आपको नहीं याद कर रहा है. चलो कंप्लीटेड. सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट. So now we can make a theory statements related to unit hydrograph. Democracy is there, that is why I am protecting the democracy. उपाध्याय गारू. So पहले तो ये बात सुनो, unit hydrograph is a direct runoff hydrograph. It is not flood hydrograph. Unit hydrograph is a direct runoff hydrograph. Please understand, it's not a flood hydrograph. Direct runoff hydrograph produced by ये यूनिफॉर्म स्टॉर्म ऑफ, प्रोड्यूस्ड बाय ये यूनिफॉर्म स्टॉर्म ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन. ये सर्टेन ड्यूरेशन क्या होता है? सर्टेन ड्यूरेशन क्या होता है? डी आवर. सर्टेन ड्यूरेशन डी आवर. यूनिफॉर्म स्टॉर्म ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन डी आवर रिजल्टिंग ये यूनिट डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, यूनिट डेप्थ 1 सेंटीमीटर. ये यूनिट डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? over the entire catchment is called as unit hydrograph.
So एक बार statement पढ़ लो अच्छे से. Please read the statement once. If you have any doubt, please ask me. Direct runoff hydrograph produced by uniform storm of certain duration d hour, resulting unit depth of effective rainfall over the entire catchment, is called as unit hydrograph. Is called as unit hydrograph. Clear to everyone? टाइम स्टॉर्म को एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा ना इमरान जी. 30 मिनट स्टॉर्म देने वाला फ्लो वेरी वेरी लेस होता है ना बेटा. इतना कम स्टॉर्म के लिए बात करना जरूरी नहीं है ना. इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर इतना. इमरान गारू अंडरस्टैंड बेटा. 30-minute rainfall giving a small amount of discharge, it does not carry any kind of consideration. क्योंकि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन itself is minimum 30 minutes होता है ना. डिस्चार्ज मिलेगा क्या आउटलेट में? रेनफॉल 30 मिनट हो गया, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 30 मिनट, आउटलेट में डिस्चार्ज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा ना बेटा. सो इनका एनालिसिस भी नहीं करना पड़ेगा. हाँ, इनका एनालिसिस भी नहीं करना पड़ेगा. ये क्या बात कर रहे हैं कृष्णा गारू? क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? गाइस टेल मी, इज इट क्लियर? व्हाट इज द स्टेटमेंट रिटन? इज इट क्लियर? कुछ डाउट है इनके बारे में? इनके बारे में कुछ डाउट है? बताओ फटाफट. सो यूनिट हाइड्रोग्राफ is based on the assumptions. Very important question, very important. बार बार आ रहा है. Yes, 1 centimeter is important here. perfect. 1 centimeter is important. इनके साथ साथ में गेट में भी ये theoretical question पूछ लिया. गेट में भी ये क्वेश्चन आ गया. What are considerations or assumptions of unit hydrograph? First one, linear response होता है. First assumption, linear response. Second assumption, time invariance. Time invariance, linear response and time invariance ध्यान से लिखो. Very important होता है. Very important होता है linear response, time invariance. Completed writing? So what should be linear response? What is linear response? ये सिंपल ना, बोल दिया ऑलरेडी. बोल दिया ना ये वाला linear response के बारे में. D hour discharge for 1 centimeter effective rainfall given. क्या हो गया? In future the same D hour future storm. In future the same D hour, very important time duration of storm. D hour future storm linearly varies with effective rainfall depth. Q is directly proportional to ERF depth. ये तो बोल दिया ना. So we can write an example. A 4-hour storm gives us discharge of 40 meter cube per second in unit hydrograph. कहा? UH में. UH का डेप्थ क्या होता है? What is the depth of unit hydrograph? Everyone I need answer. हर एक स्टूडेंट से आंसर होना चाहिए हमको. हर एक स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए. What is the depth of unit hydrograph? बोलो फटाफट. सिंधु 1 centimeter. Good. Now future 5 centimeter 4-hour storm. 5 centimeter rainfall of 4-hour storm. Then what is the discharge? ये तो निपुण मेथड होता है, सिंपल मेथड, सिंपल आसान मेथड निपुण गारू का. तो क्या होता है प्रशांत बोलो ना. सिंपल ना 5 into 40 200 मीटर क्यूब पर सेकंड. सिंपल में हो गया. इतना आसान में हो गया. देखो वेरी वेरी इजी. इतना आसान में चले गए. देखो बेटा वेरी वेरी इजी ना. सेम विल राइट वन मोर एग्जांपल. फ्यूचर 3 centimeter रेनफॉल, सेम 4-hour storm. देखो एक बार ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मस्ट बी कांस्टेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अब तो क्या हो गया 3 into 40. सो लेजी पीपल गिव अस स्मार्ट सॉल्यूशंस ना. देखो हमारा लेजी सुधा गारू स्मार्ट सॉल्यूशन बना लिया हमको. नो नीड टू गो टू द कैचमेंट, नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज, नो नीड टू मेजर एनीथिंग, नो नीड टू ड्रा द ग्राफ अगेन. जस्ट मल्टीप्लाई विद द इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ. हो गया काम तो हो गया. चलो क्लियर गाइस? क्लियर टू एवरीवन? लीनियर रिस्पांस क्या होता है? नाउ टाइम इनवेरिएंस बात कर रहे हैं. टाइम इनवेरिएंस में क्या हो रहा है? टाइम इनवेरिएंस में you plotted unit hydrograph ordinates na? The ordinates of D hour unit hydrograph can be utilized. Ordinates of D hour unit hydrograph can be utilized for any future D hour storm. समझ आ? D hour storm, ordinates of D hour unit hydrograph used irrespective of
फ्यूचर टाइम ऑफ अकरेंस, फ्यूचर टाइम ऑफ अकरेंस टिल, फ्यूचर में कब होता है, 5 साल के बाद होता है, 10 साल के बाद होता है, 20 साल के बाद होता है, until catchment characters are modified, catchment characteristics are modified. If catchment characteristics modified, catchment characteristics modified, then you need to change the unit hydrograph. If catchment characteristics are constant, this unit hydrograph enough. Catchment characteristics modified, new unit hydrograph to nikalna padega, you have to find out, you have to get out, you have to bring new unit hydrograph. So ordinate of d hour unit hydrograph can be utilized for कुछ भी future d hour storm irrespective of future time of occurrence till catchment characteristics are modified. समझ आ गया? Is that clear? और किसी को डाउट होगा बताओ फटाफट, और किसी को डाउट होगा बताओ फटाफट, टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रिस्पांस के बारे में, टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रिस्पांस के बारे में. इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर टाइम ऑफ अकरेंस मींस फ्यूचर में 1 साल के बाद होता है, फ्यूचर में 20 साल के बाद होता है, फ्यूचर में 10 साल के बाद होता है, कभी भी ना. यस करेक्ट. 2024 में होगा, 2023 में होगा, 2030 में होगा, 2050 में होगा, कभी होता है, कोई दिक्कत नहीं हमको. चलो what happened? Sindhu, what is the doubt? Yes, condition storm must be d hour. The 30 year is a theoretical time. 30 year will be the theoretical time, Juveria, because we give the design period na, we give the design period for catchment 30 year na, we give the design period for catchment 30 year na. Manish bhaiya, okay Sindhu, सुनो बेटा. So today you have been appointed as a new hydrologist. आपको जॉब मिल गया हाइड्रोलॉजिस्ट. आप कैचमेंट के पास गया, आज एक रेनफॉल हो गया 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर 4 आवर. So you have done all unit hydrograph catchment characteristics, ड्रा कर लिया. You have drawn the unit hydrograph graph. Q1, Q2, Q3, Q4 मिल गए आपको. So you are taking rest now. बाद में 3 months के बाद एक 4 hour rainfall, then you no need to go to the catchment. You sit in your office. रेन गाज स्टेशन से मिलेगा आपको डेप्थ, रेन गाज स्टेशन से आपको मिलेगा ना डेप्थ वैल्यू, ऑब्जर्व इन द रेन गाज स्टेशन. आपका पास एक ग्राफ है, एक ग्राफ कॉपी करो, इनटू 5 करो, हो जाएगा बस. आपका पास ऑलरेडी 4 hour unit hydrograph is there ना. ये तो बोल रहे 4 hour unit hydrograph. This already you are having 4 hour unit hydrograph. Take xerox of that, take the xerox copy of that. हर एक जगह पे इनटू 5, Q1 इनटू 5, Q2 इनटू 5, Q3 इनटू 5 ऐसा करो. बाद में कभी भी. Then next 2 years के बाद 3 सेंटीमीटर हो गया, और एक नया xerox ले लो, Q1 इनटू 3, Q2 इनटू 3, Q3 इनटू 3 ऐसा करो. ये बोल रहे लीनियर रिस्पांस. ये कब यूज करेगा, कब तक यूज करेगा आप? You can use for 1 month, 1 year, 5 year, 10 year, 30 year, till catchment properties, catchment area is not changing. Catchment area कब तक कांस्टेंट होगा, वहां तक यूज करो. Catchment time of concentration कब तक कांस्टेंट होगा, वहां तक यूज करो. If your catchment characteristics are modified, you need to change the unit hydrograph. नहीं होगा, you can use. So minimum कम से कम 30 year होता है, कम से कम minimum 30 year होता है. So construction of unit hydrograph. Unit hydrograph कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे? फर्स्ट फॉर ए d hour storm, for a d hour storm, measure discharge values at a point in stream. So हमारा सुधांकुल स्ट्रीम का पास में चलेगा, ठीक है, measure the discharge values, ठीक है, measure the discharge values, measure discharge values at a point in stream for a d hour storm. So plot FH पता है ना, FH क्या है? फ्लड हाइड्रोग्राफ. QFH वर्सेस टाइम, ये तो पता है ना हमको. ओके कृष्णा का बाय बाय. देन find base flow, then QDRH. What is QDRH? QFH minus base flow. अब तो आएगा plot DRH versus time, plot direct runoff hydrograph versus time, DRO you can write, plot DRO versus time, that will be DRH, direct runoff hydrograph. Now find volume of effective rainfall. कैसा होता है वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल? यस्टरडे हम सॉल्व किया ना, हाफ इनटू टीबी इनटू क्यू, ए प्लस बी बाई 2 इनटू क्यूपी, और सम ऑफ डिस्चार्जेस इनटू टाइम. कहां से? एरिया ऑफ डीआरएच से मिलेगा नहीं. वी कैन गेट वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल फ्रॉम एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. ये तो मिलेगा नहीं, बोलो फटाफट. वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल कहां से मिलेगा? एरिया ऑफ डीआरएच से. एरिया ऑफ डीआरएच से 4 स्टेप्स आर क्लियर ना? ऑल द 4 स्टेप्स आर क्लियर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फील्ड कैचमेंट स्ट्रीम, measuring Q1, Q2, Q3, Q4, QFH versus time. Then base flow finding, QFH minus base flow, DRH मिलेगा, DRO versus time, DRH, area of DRH. चलो, now estimate area of catchment. area of catchment ये तो पता चलेगा ना ज्योमेट्री से हमको. area of catchment तो पता चलेगा ना, area of catchment. Then
find ERF depth. कैसा आएगा ERF depth? So you can get already you have volume of effective rainfall number 4. Number 4 volume of effective rainfall मिलेगा नहीं, divided by volume of effective rainfall divided by area of catchment. Area of catchment. ये तो मिलेगा, we can write like this, sum of QI into delta T. This is basic formula. Sum of given discharges into time interval. Sum of given discharges into time interval upon area of catchment. Area of catchment. मिल गया आपको? ये तो मिल गया effective rainfall depth. Clear? Clear to everyone? Clear to everyone? समझ आ गया? ध्यान से सुनो एक बार मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो. You have this QDRH ordinates ना, direct runoff ordinate 1, direct runoff ordinate 2, direct runoff ordinate 3, direct runoff ordinate 4, ऐसा आ गया ना. ये कौन सा डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल को? That is for this depth of effective rainfall. QDR1, QDR2, QDR3, those are for this depth of effective rainfall. समझ आ रहा है बेटा? You got Q1, Q2, Q3, Q4. ये वैल्यूज किसका डेप्थ को होता है? ये डेप्थ. फिर हमको 1 सेंटीमीटर डेप्थ को चाहिए तो कैसा करेंगे? 1 सेंटीमीटर डेप्थ को चाहिए अभी, because QUH is a direct runoff hydrograph for 1 सेंटीमीटर. पता है ना आपको? QUH is a direct runoff hydrograph for 1 सेंटीमीटर. So QDRH upon effective rainfall होता है या नहीं? So you can say this QUH meter cube per second per 1 centimeter. This is meter cube per second. This is centimeter. आ गया unit hydrograph ordinates. Plot QUH versus time. So that is unit hydrograph. Is that clear? बाबू चपंडी? So ये एक न्यूमेरिकल करेंगे इमीडिएटली क्वेश्चन लिखने के बाद इमीडिएटली एक न्यूमेरिकल करेंगे. पूरा इतना आसान में हो जाएगा आपको. चलो करेंगे. कंप्लीटेड राइटिंग. लक्ष्मी, श्रुति, अरे उपाध्याय गारू हो गया. उपाध्याय चलो. दिव्यांशु, अरे आप इतना जल्दी लिख दिया क्या? completed Divyanshu? This is question we are writing. T 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. QFH 5, 15, 30, 45, 60, 40, 30, 25. So this is the data given, and they said area is 100 kilometer square. Base flow is 5 meter cube per second. So हम UH निकालना पड़ेगा अभी. Okay? Area 100 kilometer square, base flow 5 meter cube per second. Unit hydrograph तो निकालना पड़ेगा. So what is first work? हर एक जगह में बेस फ्लो लिखो. ये कांस्टेंट रहेगा. ये तो कांस्टेंट रहेगा. Next we can get QDRH 0, 10, 25, 40, 55, 35, 25, 15, 0. So ये तो 0 से शुरू करना, 0 से एंड होना. देखो एक बार QDRH मिल गया. एक बार सम वैल्यूज बता दो ना यार करके. सम ऑफ QI बताओ ना प्लीज. Now volume of effective rainfall, sum of discharges into delta T क्या होता है? What is the delta T? 4 hours only ना? 4 hours into 3600 into 3600. So now you can get effective rainfall 205 into 4 into 3600. Area 100 into 10 power 6. What are you getting? 205 into 4 into 3600 by area 100 into 10 power 6. 0.0295 meter. 2.95 centimeter. So I'm making round off to 3 centimeter. ठीक है? I will make it round off to 3 centimeter. अब तो मिलेगा आपको QUH. हो जाएगा ना अभी आसान. QUH, QDRH by ERF. 0, 10 by 3, 25 by 3, 45 by 3, 55 by 3, 35 by 3, 25 by 3, 15 by 3, 0. बोलो फटाफट. 0,
3.33, 8.33, 13.33, 18.33, 11.67, 8.33, 5 हो गया. So this is peak value of FH, peak value of BRH, peak value of UH. These are all peak values. समझ आ गया? How to construct UH? How to construct UH समझ आ गया? बोलो फटाफट. Clear to everyone? चलो we'll move on. Anyone having doubt? अब तो पूछ लो बेटा. Anyone having doubt? Now you can ask. चलो. Good. So now yesterday हम फार्मूला लिख दिया ना, ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल ऐसा बोल दिया ना, ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल. सो अभी तो इनके लिए एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं. फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ यूएच, फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ यूएच. फर्स्ट वन ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ, शेप हाफ इनटू टाइम बेस इनटू क्यू पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाफ इनटू टाइम बेस इनटू क्यू पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, 3600 फॉर यूनिट कन्वर्शन, एरिया ऑफ कैचमेंट. एंड व्हाट इज द डेप्थ? क्या होता है डेप्थ? बोलो फटाफट. व्हाट इज द डेप्थ? बोलो फटाफट. फटाफट बोलो. फटाफट एवरीवन. हर एक स्टूडेंट, एवरीवन. यस 1 सेंटीमीटर. बट इधर तो 0.01 मीटर यूनिट कन्वर्शन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में होता है, ये मीटर में होता है. तो 10 पावर -2, 10 पावर -2 लेना पड़ेगा. 10 पावर -2 लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर नहीं लेना पड़ेगा. ये गलत काम करेंगे हम एग्जाम में. बिना यूनिट कन्वर्शन ये तो 1 नेगलेक्ट करेंगे. नेगलेक्ट मत करो बेटा. 10 पावर -2 लेना पड़ेगा. 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर. समझ आ गया? डोंट टेक 1 सेंटीमीटर इन द फार्मूला. डोंट टेक 1 सेंटीमीटर इन द फार्मूला. यस 1/100 10 -2. स्टार मार्क लगा दो. इन ऑल फार्मूलास दैट इज ओनली द डिफरेंस बेटा. हर एक फार्मूला में ये होता है डिफरेंस. हर एक फार्मूला में ये होता है डिफरेंस. समझ आ रहा है? ट्रेपेजॉइडल यूनिट हाइड्रोग्राफ, ट्रेपेजॉइडल यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये क्यूपी क्यूएच इंटू 3600 सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं. ओनली द थिंग 10⁻². बस ओनली द थिंग यू कैन टेक 10⁻². इरेगुलर शेप के लिए यूनिफॉर्म टाइम, यूनिफॉर्म डेल्टा टी, सम ऑफ क्यू आई into delta t into 3600. The only work you have to do, you can take 10⁻². बस समझ आ गया बाबू? Is that clear to everyone? चलो completed writing, shall we move on? हम चल सकते हैं इधर से. So first what we said, for flood hydrograph to unit hydrograph. So पहले हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ डेटा दिया, हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को निकल सकता है. QUH is equal to QFH minus base flow upon effective rainfall depth. This is only taken. QUH is equal to QFH minus base flow upon effective rainfall depth. So this is only equal to QDRH by ERF depth. Same होता है ना बेटा? QDRH by effective rainfall depth. ये effective rainfall depth कैसा मिलेगा आपको? How you can get effective rainfall depth in the exam? बोलो फटाफट आंसर बोलो. फार्मूला. How you can get effective rainfall depth फार्मूला. अरे हम इतना बार पूछ रहे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होने के लिए बेटा. फॉर यूर प्रैक्टिस. आप इधर बोल सकते तो एग्जाम में आएगा, इधर नहीं बोल सकते तो एग्जाम में कैसे आएगा? सो दैट इज व्हाई आई एम शाउटिंग एवरीवन सेटल द आंसर. आप इधर से आपका दिमाग में सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर ब्रेन इन द क्लास फर्स्ट. पहले क्लास में आपका दिमाग यूज करना ट्राई करो. आपका दिमाग यूज करना ट्राई करो पहले क्लास में, बाद में एग्जाम में आएगा. सो P minus 5 into T, P minus 5 into T, वॉल्यूम बाय एरिया. ये पूरा ग्राफ देने के बाद वो भी हो जाएगा वॉल्यूम बाय एरिया. वॉल्यूम बाय एरिया वो भी हो जाएगा रन ऑफ से. बट हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये डेटा दिएगा डायरेक्टली. डायरेक्टली ये तो दिएगा हमको. यू कैन गेट डायरेक्टली फ्रॉम द P minus 5 into T हो जाएगा. नहीं होगा वॉल्यूम बाय एरिया, नहीं होगा वॉल्यूम बाय एरिया. ठीक है चलो. नाउ उल्टा होना चाहिए. यू कंस्ट्रक्टेड यूनिट हाइड्रोग्राफ. आप फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. यू नीड टू फाइंड आउट फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ से फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा. वो क्या होता है? QFH is equal to QUH into effective rainfall depth प्लस बेस फ्लो ना, प्लस बेस फ्लो ना. हो जाएगा ना बेटा? देखो एक बार, ये ERF डेप्थ इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा बेस फ्लो माइनस ईयर, और LHS it will be added. So QUH into ERF depth plus base flow QFH.
QDRH ना, QUH into ER depth, QDRH into base flow, QDRH into base flow. गेट में दोनों में आ सकता है बेटा, सॉरी प्लस, हाँ प्लस प्लस, गेट में दोनों में आ सकता है, दोनों में आ सकता है। Shall we move on? We'll solve the question. चलो, unit hydrograph of a catchment, 6-hour unit hydrograph of a catchment, triangular in shape, triangular in shape. So एक बार सुनो ध्यान से, you are having in exam में चलेगा, गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में समझ आ गया आपको यूनिट, आपको हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ में होता है फ्लड, DRH, SH, you have unit hydrograph, so many types. So पहले आप ध्यान से देखना पड़ेगा what hydrograph model they ask है. First need to find out type of hydrograph. Type of hydrograph is unit hydrograph. Type of hydrograph is unit hydrograph. So first need to check while solving question. First check is about the type of hydrograph. Type of hydrograph. Second check क्या होता है? Second check is about shape of hydrograph. Shape of hydrograph. Third check duration. Duration. ये तीनों चेक करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप दोनों को बोल रहे हैं सावरा सलोप गारू, निपुण गारू, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, एग्जाम में पक्का गलत करेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन अप्रोच बात करने के टाइम पे आप नहीं सुन रहे, क्वेश्चन अप्रोच नहीं समझ आएगा, एग्जाम में नेगेटिव मार्क मिलेगा. तो चक्कर है दोनों के लिए. यू बोथ हैव सम शुगर कंप्लेंट है आपके पास. अरे आप इधर आ गया सिखाने के लिए आ गया आप, नॉट टू शो योर टैलेंट. टैलेंट तो एग्जाम में देखो, शो योर टैलेंट इन द एग्जाम, नॉट इन द क्लास. समझ आ रहा है? सुनो ध्यान से, सीखो, अप्रोच सुनो, पढ़ लो, देन योर एग्जाम विल बी सक्सेसफुल. I am scolding because of your benefit only. अब दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बट इफ यू आर नॉट लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, एग्जाम में अप्रोच मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट हो गया, अभी कोई आदमी कर सकता है, एनी स्टूडेंट कैन डू नाउ, एनी स्टूडेंट कैन डू नाउ, बट एग्जाम में डिफरेंट अप्रोचेस विल कम. एग्जाम में वी हैव फ्लड हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट कर्व हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, एस हाइड्रोग्राफ, सो मेनी थिंग्स. देन हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन? पहले हम देख सकता है टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफ, देन वी थिंक अबाउट व्हाट इज द शेप, थर्ड वी कैन गो अहेड विद द ड्यूरेशन. सो पहले हम देख लिया ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, देन वी कैन गो विद द ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो 6 आवर ड्यूरेशन होता है, 6 आवर. टोटल टाइम बेस दिया 36 आवर, पीक डिस्चार्ज 18. सो अभी लिखो, अभी फार्मूला हाफ इनटू 3600 एरिया चाहिए. क्या लेना पड़ेगा इधर? व्हाट वी शुड टेक बेस्ड ऑन द बोर यूनिट, बेस्ड ऑन द बोर यूनिट क्या लेना पड़ेगा? बोलो एवरीवन, अरे आप बोलो ना आंसर. 10⁻², 10⁻² लेना पड़ेगा उधर. पूछने के बाद तो ना नहीं बोलेगा. देखो, व्हेन आई आस्क दे वोंट से द आंसर, व्हेन आई एम नॉट आस्किंग दे आर रेडी टू गिव आंसर. क्या रे? एरिया ऑफ कैचमेंट. सो यू आर आस्किंग व्हाई 10⁻²? Why 10⁻² you are asking Satyendra? 1 centimeter effective rainfall depth, because since it is a unit hydrograph, 1 centimeter. ये तो निकलना पड़ेगा ना एरिया ऑफ कैचमेंट. एरिया ऑफ कैचमेंट तो निकलना पड़ेगा. एरिया वी हैव टू फाइंड आउट. क्या है? 116.64, 116.64 into 116.64 kilometers square. Satyendra Garu, catchment is not a triangular shape. No, Satyendra, pehle. Unit hydrograph is a triangular shape. Unit hydrograph of a catchment is a triangular shape. Catchment का shape हमको जरूरत भी नहीं. We don't want anyway. We never consider catchment shape. हम हमारा ग्राफ का shape ले रहे हैं. That is why half time discharge, half BH, half BH. समझ नहीं आ गया? You are taking QUH versus time ना. So that is, you got here 18. You got this as 36. So that unit hydrograph graph का shape triangular है, catchment का नहीं, catchment का नहीं. This is completed by everyone, completed, finished. Average rainfall over a 3-hour duration storm is, the average rainfall over a 3-hour duration storm is 2.7 centimeters. So you need this slide. हो गया बेटा? Loss rate is 0.3 centimeter per hour. Average rainfall for a 3-hour duration storm 2.7 centimeter. Loss rate 0.3 centimeter per hour. अब तो हमको effective rainfall मिलेगा ना, देखो एक बार. Precipitation 2.7,
loss rate 0.3 for 3 hours. Effective rainfall depth is 1.8 centimeter. 1.8 centimeter. Base flow 20. Flood hydrograph बोल रहे देखो, flood hydrograph with base flow 20, peak flow 210, peak of 3 hour unit hydrograph, peak of 3 hour unit hydrograph. You have the formula QUH is equal to QFH minus base flow upon ERF. होता है ना बेटा, QFH 210, base flow 20, ERF 1.8. What are you getting? सो सिंपल हमारा फार्मूला से वन स्टेप में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करने के बाद जिंदगी चल जाएगा. वी हैव रिटन इस फार्मूला में, ये फार्मूला से फटाफट हो जाएगा हमको, नहीं होगा तो जिंदगी पूरा स्टेप्स लिख के सॉल्व करके चलेगा. मिल गया आंसर? किसी को डाउट है इनके बारे में? बोलो बेटा. फोर आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन इज यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन इज 4 आवर. गिवन इज यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन इज 4 आवर. इट इज अ ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है. टाइम बेस ऑफ 80 आवर्स, टाइम बेस ऑफ 80 आवर्स. सो by seeing this you can plot the graph. This time base is 80 hours. QUH, area of catchment 720, area of catchment 720, base flow 30, phi index 1 mm per hour, storm of 4 centimeter occurs for 4 hours. So what is this peak value? First question क्या होता है, what is this peak value? यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक पूछ रहा है हमको, प्लीज अंडरस्टैंड. यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक हाफ इंटू टाइम बेस 80 आवर 3600 इंटू क्यू पीक, ये तो होना चाहिए, इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया 720 इंटू 10 पावर 6. डेप्थ क्या होता है बोलो फटाफट. व्हाट शुड बी द डेप्थ बोलो, व्हाट शुड बी द डेप्थ, बिकॉज यू आर डिराइविंग फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ, डिराइविंग फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ 10⁻². यूनिट के लिए डिराइव कर रहा है आपको 10⁻². सो व्हाट आर यू गेटिंग? क्यू पीक ऑफ यूएच What are you getting? अब बोलो ना सौरव स्लोप करो, क्या नींद में चले गए स्लोप बाबू? पूछने के बाद तो आंसर नहीं दे रहे. हो गया, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यूज हो जाएगा बेटा इमरान. ये तो लिंक्ड आंसर, लिंक्ड आंसर क्वेश्चन होता है. देखो नाउ वी नीड पीक फ्लड डिस्चार्ज. सेम डेटा के लिए पीक फ्लड डिस्चार्ज, फ्लड को निकलना पड़ेगा. सेम डेटा ERF ईयर, चलो डन. ERF क्या होता है? रेनफॉल ऑफ 4 सेंटीमीटर, 5 वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर फॉर 4 आवर्स, 3.6 सेंटीमीटर. अब तो QFH मिलेगा. देखो एक बार QFH फार्मूला क्या है, QUH इंटू इफेक्टिव रेनफॉल प्लस बेस फ्लो. QUH 50 इंटू 3.6, बेस फ्लो 30, 210. मिल गया आंसर. समझ आ रहे बाबू कैसा सॉल्व करना? इमरान बेटा हैव यू गॉट इट? वही एक्स्ट्रा डेटा फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एडिशनल डेटा दे रहे हैं हमको. चलो हो गया काम. यस 4 मार्क्स. इधर तो 2 मार्क आएगा, इधर तो 2 मार्क आएगा. करते नवीन नवनीत. यस यू कैन डू, you can derive QDRH and you can do it directly base flow add करके, वो भी होता है. Ordinates at 1 hour intervals starting from 0 to 64210. Catchment area represented. So we have the formula sum of QI into delta T, area of catchment, unit hydrograph बोलते हैं 10⁻². So ordinates means Q1, Q2, Q3 वाला only ना. So you can take that plus 6 plus 4 plus 2 plus 1, 1 hour 3600, area of catchment into 10⁻². What are you getting area of catchment? 5.4 into 10 power 6 meter square, 5.4 kilometers. So individual ordinates देने के बाद ऐसा लेना पड़ेगा.
Q peak and shape given, we can go this. समझ आ रहे? Q peak given, shape given, triangular. इधर भी shape given, Q peak given, triangular बोल रहा है, Q peak दिया. So ये मॉडल तो चलना पड़ेगा. पर इधर तो शेप नहीं दिया हमको, ऑर्डिनेट दिया, हर एक ऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 Q4 दिया, ये लेके ऐसा करना पड़ेगा. समझ आ गया क्वेश्चन? गुड निपुण गारू, नाइस. क्लियर हो गया? शैल वी मूव ऑन? कंप्लीटेड राइटिंग आदर्श उपाध्याय गारू. One hour unit hydrograph means rainfall duration is 1 hour. D. Rainfall duration 1 hour. That is unit hydrograph. Unit hydrograph, triangular shape. Unit hydrograph बोल रहा है, triangular shape बोल रहा है. So इनका peak value is 60 yet 10 hours. Peak value achieved at 10 hours. Time base is 30 hour. Time base is 30 hour. Phi value given 4 centimeter per hour. 0.4 centimeter per hour. Base flow 15 meter cube per second. Can you solve easily? इतना आसान है ना? Catchment area चाहिए. You do it now. I'm not solving anything. You please do it. Give the answer. Catchment area 324. Everyone got it? Imran beta. कौन रे बाबा? कौन है वो थैंक यू वाला? देखो, this many questions we are having in gate. Still so many are there in gate also. मुक्का गारू तो क्लास में नहीं है ना? मुक्का गारू पानी में डूब गया. कैचमेंट का पानी में डूब गया मुक्का गारू. वो टेक के मुक्का जी, टेक के बेटा. So I'm moving. I'm not writing anything regarding the question. Everyone got the answer. बोलो फटाफट. सिंधु, श्रुति, मधु गारू, everyone. सेम क्वेश्चन दिया है हमको, सेम डेटा दिया है. रेनफॉल अकर इज 5.4 सेंटीमीटर इन 1 आवर. रेनफॉल अकर इज 5.4 सेंटीमीटर इन 1 आवर. ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ 15 आवर में. सॉल्व करो. ये तो चैलेंज है आपको, सॉल्व करो बेटा. ये तो चैलेंज है आपको, सॉल्व करो अभी. फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट एट 15 आवर होना चाहिए. फटाफट सॉल्व करो. डू इट फास्ट. ओके ओके मुक्का जी, टेक के बेटा. क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहा है. स्पीड का स्पीड, मिस्टर स्पीड सौरव बोलो. निपुण गारू चपंडी आंसर इतना फास्ट दिएगा ना आप दोनों. स्पीड सौरव, सिंपल निपुण. 225 आ रहा है. अरे आप तो टॉप रैंकर है. अच्छा गारू, आप तो टॉप रैंकर है ना. बोला अच्छा जी, क्या आ रहा है आंसर? 240 आ रहा है. 236.25. आदित्य दागे, आपको शादी तो करना पड़ेगा पक्का. दागे गारू, आपको शादी तो करना पड़ेगा जोर से. सो व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? ये हाइड्रोग्राफ में क्या हो गया? 0 to 10 हो गया ना. इधर आ गया 0 to 10. इनका वैल्यू 60. इनका वैल्यू 60. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 15th आवर को क्या होता है. सो व्हाट विल बी 15th आवर ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का 15th आवर ऑर्डिनेट क्या होता है? ये कैसा निकल जाएगा बोलो पहले. सो यू टेक द ट्रायंगल लाइक दिस. यू टेक द ट्रायंगल लाइक दिस. दिस इज 60. दिस हाइट इज 60. यहां से यहां तक हाइट इज 60. टाइम बेस इज 20. टाइम बेस इज 20. नाउ दूसरा ट्रायंगल क्या होता है? दूसरा ट्रायंगल का टाइम बेस 15. द हाइट, व्हाट इज द हाइट? हाँ, सिमिलर ट्रायंगुलर मेथड में चलेगा. देखो एक बार, सिमिलर ट्रायंगुलर मेथड में चलेगा. देखो एक बार, 20 आवर्स टाइम में 60 मीटर क्यूब पर सेकंड. 15 आवर टाइम में क्या होता है? 60 इंटू 15/20. सत्येंद्र, ये मिलेगा नहीं मिलेगा? सत्येंद्र गारू चपंडी. सो क्यू यू एच फॉर 15th आवर. क्यू यू एच फॉर 15th आवर 45 मिल गया या नहीं? क्यू यू एच फॉर 15th आवर मिल गया. नाउ क्यू एफ एच 45 इंटू डेप्थ 5 सेंटीमीटर प्लस बेस फ्लो 15. डेप्थ तो 5 सेंटीमीटर है, बेस फ्लो 15. क्या हो गया अभी? आदित्य दागे नियर बाय नहीं, देखो एग्जैक्ट आ गया.
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट तो समझ होना चाहिए ना. दिस इज ओनली यू नीड टू लर्न. आपको ये पता, यू नीड टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट ओनली. रिमाइंडिंग तो आसान है. कहां चले गए धागेगारू? सत्येंद्र आप बंद हो गया क्लास में? चलो, कुछ में ट्रायंगुलर कभी भी नहीं मिलेगा, हो जाएगा, बट QFH कभी भी आपको ट्रायंगुलर नहीं मिलेगा ना. QFH ट्रायंगुलर कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा. यस, आई नो दैट ऋषिकेश यू गिव फॉर QDRH. यू कांट ड्रा डायरेक्टली QFH. वो भी बोल रहे हैं आपको पता नहीं, निपुण जी वो भी बोल रहे हैं हमको पता नहीं व्हाट इज द शेप ऑफ QFH QDRH. दोनों का शेप का बारे में हमको पता नहीं, बिकॉज ये दे रहा है यूनिट हाइड्रोग्राफ का शेप ट्रायंगुलर. सो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ शेप ट्रायंगुलर भी लेके सॉल्व करना पड़ेगा. डोंट एज्यूम FH इज ट्रायंगुलर, डोंट एज्यूम DRH इज ट्रायंगुलर. समझ आ गया? इनसे नहीं करना पड़ेगा बस. कंप्लीटेड हर्ष? ये तो आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वी सॉल्व ना, ओनली वैल्यूज चेंजिंग. Ordinates of 2 hour unit hydrograph for 1 hour intervals, values provided. What is area of catchment? Catchment area. अब सॉल्व करो, बताओ. प्लीज डू इट एंड टेल मी. आसान क्वेश्चन. वन पॉइंट फाइव कैसा आ गया बाबू? फिल चेक करो ना बेटा. सम ऑफ QI इंटू डेल्टा टी 10⁻². सम ऑफ QI 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 1 hour unit hydrograph, sorry 1 hour time intervals, एरिया इंटू 10⁻². फिल देखो कहाँ गलत किया आप. हाँ, 2 is D. 2 is the duration of rainfall. 1 hour interval, that is delta T ना. 1 hour interval is delta T. So ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, ज्यादा डेटा है हमारे पास. ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल हम नहीं यूज करेंगे इन हाइड्रोग्राफ डेटा, ओनली इफेक्टिव रेनफॉल निकलने में यूज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल. और कभी भी कहां भी नहीं यूज करेंगे ना. नो वे वी आर गोइंग टू यूज इट. चलो हो गया. एवरीवन कंप्लीटेड? एवरीवन कंप्लीटेड? एक काम करो. सो दिस आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. ये डाउनलोड करो. ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क. इतना सारा होमवर्क. अरे बाबा, so many questions are here, around 40 questions you are having. 40 questions you are having, this is your homework. Yes, 40 questions you are having, this is your homework. Okay, डाउनलोड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कल फटाफट कर देंगे. हाँ, आई विल सेंड इट. आई विल सेंड इट PDF ग्रुप में. ऑब्वियसली PDF ग्रुप में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो दोज हु आर राइटिंग SSC JEE, 2 बजे आपको एक सेशन है. दोज हु आर राइटिंग SSC JEE, सो टिप्स, डोंट्स एंड डूस एंड डू नॉट्स. लास्ट डे टिप्स फॉर SSC JEE 2 बजे है क्लास. ठीक है, उधर आ जाओ. ठीक है, मिलेंगे उधर. केसर जी, बाय बाय. बाय बाय गाइस. बाय बाय गाइस. देखो देखो काउंटिंग अच्छे से देखो बेटा.